Hello lovely people, welcome to another English lesson today. This is Priyanka Chaudhary. आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है. It is because this video is especially for those people who are at their beginners level. Means अगर आप इंग्लिश बोलने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और आपसे सेंटेंसेस फ्रेम नहीं किए जा रहे हैं इंग्लिश में, तो ये वीडियो आपके लिए है. वेल इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंसेस फ्रेम करने में. इसके लिए आपको फॉलो करने होंगे 3 स्टेप्स. स्टेप नंबर 1 में आपके सामने आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी एक पिक्चर, एक इमेज. उस इमेज को आपको ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखना है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. इन सेकेंड स्टेप आपको उस इमेज से रिलेटेड, उस पिक्चर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको अपने माइंड में रखने हैं या फिर आपको कुछ वर्ड्स वो नोट डाउन भी कर सकते हैं आप. जो भी उस इमेज से रिलेटेड वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स आपको नोट डाउन करने होंगे. इन थर्ड स्टेप आपको वो सभी इंग्लिश वर्ड्स जो आपने उस इमेज को देख के सोचे हैं या लिखे हैं उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके अब आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होंगे. सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स बिगिन. अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the notification bell for getting more English content in future. Well, now without any further ado, let's get into the video. So here is the first step. Look at the picture. Now step number 2. इस इमेज को देखने पर आपके दिमाग में कुछ ऐसे वर्ड्स आए होंगे, आई एम श्योर. बॉय, फुटबॉल, येलो टी शर्ट, red color shorts, blue shoes, play, happy. अब इन वर्ड्स को यूज़ करके हम बनाएंगे सेंटेंसेस, जो है स्टेप नंबर 3. अब सेंटेंसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं. सो द वर्ड इज बॉय, सो यू कैन से देयर इज अ बॉय इन द पिक्चर. द बॉय इज वेयरिंग येलो कलर टी शर्ट. He is happy. He is playing football. The boy is wearing red color shorts and blue shoes. See, इस तरीके से आपने इस इमेज पे more than 5 sentences फ्रेम किए. Now let's practice with another picture. Here is the next picture. स्टेप नंबर 2. इस इमेज को देख के आपके माइंड में कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं. ओल्ड मैन, सिटिंग, फोन, टॉकिंग, ट्री, पार्क, ग्रीनरी, साइकिल और भी बहुत सारे वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं. नाउ अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे. लेट्स स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिए. देयर इज एन ओल्ड मैन इन द पिक्चर. ही इज सिटिंग अंडर द ट्री. ही इज टॉकिंग ऑन फोन. ही इज लुकिंग हैप्पी. There is a cycle behind the old man. There is a park. There is greenery in the park. There is green grass. Like this. Well done. Now let's move on to the next picture for practice. अब आपके दिमाग में इस इमेज को देख के कौन से वर्ड्स आते हैं? अ यंग मैन, स्पेक्टिकल्स, राइटिंग, पेन, ऑफिस, लैपटॉप, वर्क, बिजी, सिटिंग, watch,
computer and so many other things. चलिए अब बनाते हैं इस पर sentences. First one. There is a young man in the picture. He is wearing a blue color shirt. He is wearing spectacles also. He is busy in writing. He is sitting in his office. He is engaged or busy in his work. There is a computer on the table. He is wearing a watch also. He is writing with a yellow color pen. Like this और भी sentences आप frame कर सकते हैं. Let me know your sentences in the comments. Well, now let's move on to the next picture. So, इस पिक्चर को देखने के बाद आपके माइंड में कुछ ऐसे वर्ड्स आ सकते हैं. People, doctor, patient, treatment, nervous, tensed, confident, clinic or hospital, sitting, and so many other things. Well, now let's make sentences. This is a picture of a hospital, or you can say this is a picture of a clinic. There are two people. One is a doctor and another one is a patient. The doctor is looking confident. The patient looks tensed and nervous. The doctor is doing the treatment. The doctor is measuring the BP, the blood pressure of the patient. They both are sitting in a clinic. Like this, आप भी ऐसे बहुत सारे sentences frame कर सकते हैं. Now let's move on to the next and the last picture of this video. चलिए आप कुछ वर्ड्स नोट डाउन करते हैं इस इमेज से रिलेटेड. अ बॉय, ब्रश, towel, a clock, the tap, morning, and that's all. Now let's practice making sentences. There is a boy in the picture. The boy is brushing his teeth. It's a morning time. There is a towel hanging behind the boy. There is a clock hanging on the wall. The tap is closed. The boy is looking drowsy, or you can say sleepy. Like this, you can make so many other sentences. Well, that's it for today's video. I hope you really enjoyed and you learned a lot making sentences in English. इस तरीके से आप भी बहुत सारे sentences बना सकते हैं. आप कोई भी इमेज ले लीजिए फ्रॉम गूगल और फ्रॉम योर ओन फ़ोन. अपने फ़ोन में भी आप किसी भी इमेज को देख के ट्राई करिए सेंटेंसेस बोलने के लिए और सेंटेंसेस बनाने के लिए. आई होप ये टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करने वाली है इंग्लिश स्पीकिंग में, और जिसके लिए आपको किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर की ज़रूरत नहीं है. आपकी और बेहतर प्रैक्टिस के लिए मैं एक इमेज आपके साथ अब लास्ट में शेयर करने वाली हूँ, जिस इमेज को देख के आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होंगे एटलीस्ट 10 इन द कमेंट्स. सो लेट मी नो ऑल योर सेंटेंसेस दैट यू आर गोइंग टू फ्रेम इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए सिर्फ इतना ही.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप चाहते हैं मैं ऐसी और भी वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।